Dear students of class 8th, we are in the chapter Force and Pressure and we are reading non-contact forces. Today we will read gravitational force, which is a non-contact force. I'm your science teacher Ali Muhammad. So shall we start, students? Students, if we go to definition, the pull exerted by objects possessing mass is called gravitational force. जिन चीज़ों की वजन होती है, अगर वो किसी चीज़ को अपने ओर खींचते हैं तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। न्यूटन ने कहा था, न्यूटन एक मशहूर साइंटिस्ट, उसने कहा था कि एवरी ऑब्जेक्ट इज इन दिस यूनिवर्स पुल्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स। यानी एक फोर्स होती है जिससे कि इस कायनात में, इस दुनिया में एक चीज़ दूसरी को अपनी ओर खींचती है। इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको हम उर्दू में कहते हैं, तो इसको उर्दू में कहेंगे कुव्वत सकल, कुव्वत सकल। कुव्वत सकल। Dear students, the gravitational force between two objects is a force of attraction, and it acts if the two objects are not connected by any means. It is the gravitational force between the sun and the earth which holds the earth in its orbit around the sun. आपने पढ़ा है कि the 9 or 8 planets around the sun which are revolving around the sun, कि वो कैसे अपने अपने मदार पर, अपने अपने जो है ऑर्बिट पर चलते हैं। वजह ये है कि ये ग्रेविटेशनल पुल है, ये ग्रेविटेशनल पुल है जिसकी वजह से हर एक प्लानेट अपने अपने मदार पर, अपने अपने ऑर्बिट पर चलता है। और इसी तरह ये जो सन एंड द अर्थ, इसमें भी एक पुल है कि ज़मीन भी अपनी जगह पर नहीं हिलती है। यानी कि ये अपने जो है सन है, इसके अराउंड यानी रोटेशन करती है, रिवॉल्व करती है। तो इसी तरह जो बाकी प्लांट्स है वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो वजह ये है कि ये ग्रेविटेशन पुल है, ये ग्रेविटेशन फोर्स है। ओके, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द मून विच होल्ड्स द मून इट इज ऑर्बिट अराउंड अर्थ। इसी तरह मून भी या बाकी सैटेलाइट जो अपनी ऑर्बिट्स की, अपनी जो है इन सैटेलाइट्स सैटेलाइट्स जो मून्स होते हैं, ये प्लैनेट्स यानी डिफरेंट प्लैनेट्स। आपको पता है कि अर्थ के बगैर भी जो कुछ प्लैनेट्स है जिनकी मून्स है, तो वो उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, तो रिवॉल्व करती है। तो ये भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स having small masses, say 2 stones if we say, is very weak and cannot be detected easily। यानी कि अगर दो चीज़ें हो, मतलब जो बहुत छोटी हों, पत्थर ले, तो इनका हम जो है ये जो इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, वो बहुत स्मॉल होता है। द ग्रेविटेशनल पुल और gravitational force we may say become strong only if one of the objects has a huge mass like the earth। तो इस सूरत में हम ये महसूस करते हैं। Thus the gravitational pull between the earth and a stone is very large which can be detected easily। This point will become clear in the following discussion। हम डिस्कशन करते हैं, आप अच्छी तरह से सुने कि if we drop a stone from some height, अगर हम एक हाइट से, ऊंचाई से पत्थर को नीचे गिराते हैं, it falls down towards the earth। This is because the earth exerts a gravitational force of attraction on the stone and pulls it down। In fact, the earth pulls all the objects towards its center। जमीन अपनी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। The force with which the earth pulls
the objects towards it is called the force of gravity or just gravity, इसको हम gravity कहते हैं. It is a natural force of attraction. Gravity is a natural force of attraction or pull. We are all pulled to the earth by the force of gravity. हम भी इसमें आते हैं. For example, when a child falls from a tree, it is the force of gravity which brings the child down to earth. Similarly, when a diver divers into a swimming pool, जब गोताखोर स्विमिंग पूल में गोता लगाता है, it is the force of gravity which brings him down. The force of gravity acts on all the objects. The force of gravity causes all the objects to fall down to earth. Example लेते हैं बच्चों. For example, a leaf falls from the tree due to gravity. पत्ता जब गिरता है तो gravity की वजह से नीचे आता है. A fruit also falls down from a tree due to the force of gravity. Rain falls down to earth due to the force of gravity. When we open a tap, water begins to flow down towards the ground due to the force of gravity. आपको समझ आ रहा होगा. And water in rivers flows downwards also due to the force of gravity. Dear students, when a coin slips from our hand, it falls to the ground due to the force of gravity acting on it. Actually, when a coin is held in our hand, it is at rest, not in motion. As soon as the coin is released from our hand, it begins to move downwards and ultimately falls on the ground. The downward movement of coin is brought about by the gravitational force. So, gravitational force of earth which acts in the downward direction towards the center of earth. Similarly, when a pen slips from our hand, it falls to the ground because of the force of gravity acting on it. The pen does not go upward. क्या ऊपर जाता है? जब हमारे हाथ में पेन फिसलता है, पेंसिल फिसलता है, तो ये ऊपर नहीं जाता है, तो एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये नीचे जाता है. एंड ए बॉल थ्रोन अवार्ड इज आल्सो फॉल. जब हम ऊपर बॉल को मारते हैं ऊपर आसमान की तरफ, बैक टू द अर्थ ड्यू टू द फोर्स ऑफ इट कम्स बैक टू द अर्थ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. सो वी शुड नोट हियर that the gravitational force of earth or gravity acts on objects from a distance without there being a physical contact. Therefore, gravitational force or gravity is an example of non-contact force. Hope that you understand this topic. अपनी सेहत का ख्याल रखें और फिर मिलेंगे. अस्सलाम वालेकुम.